Hello everyone. This question appears in class 6 NCERT chapter of playing with numbers. This is first question of its exercise 3.2. So the question says that what is the sum of any two odd numbers and even numbers? So part A, the sum of any two odd numbers is even number. Example, any two odd numbers. So let us 3 plus 7 is equal to 10. 5 plus 9 is equal to 14. 3 plus 5 is equal to 8. So two odds number दो odd number का सम हमेशा even number होता है. Second part B is the sum of two even number is even number. हम एग्जाम्पल्स के थ्रू चेक कर लेंगे. 4 प्लस 2 दोनों हमारे पास इवन नंबर्स हैं, इनका सम हो जाएगा 6. 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14. 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10. सो सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर. सम हमेशा इवन नंबर्स का इवन नंबर ही होता है. थैंक यू.